All right, ladies and gentlemen, I hope you are doing well. Unfortunately, some students cannot understand the basic English, तो जिसकी वजह से I have to keep the chat close again. मैंने clearly कहा था at the start of meeting, don't send useless messages. We are going to do past papers on War of Independence today. P1 question number 3C June 2021. It's one of the difficult questions जो कि एक स्टूडेंट लेवल पे मुझे लगता है कि बच्चों को लगता होगा. And the question is in front of you. Page number 47 है, past book 1 है. Page 47, past book 1. Page 47, past paper book 1. Those who don't have the past paper, जो outsiders हैं, जो कि हमारी क्लास में शामिल हैं, तो आप प्लीज सवाल को कॉपी कर सकते हैं. लेकिन कुछ सवाल जो होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं. कुछ सवाल जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं. उन्हें लेट इट गो करना होता है. उन्हें क्या करना होता है, लेट इट गो. दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जिसको आपको ना लेट इट गो करना होगा अपने एग्जामिनेशन में. लेकिन टीचर इज नॉट रॉन्ग. टीचर गलती कर सकता है, लेकिन जानबूझ के ना टीचर कोई चीज ना डिजास्टर नहीं करता है. इस क्वेश्चन के ऊपर ना एग्जामिनेशन बुक पॉइंट ऑफ व्यू पे नॉलेज अवेलेबल नहीं है इतनी. सही है. तो इसके अंदर जब मैं आंसर लिखवा रहा हूँ ना तो वो आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा. सर ऐसी बातें तो हमने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि इसकी नॉलेज बुक में नहीं है. इसकी नॉलेज अलग अलग रेफरेंस बुक से निकालनी पड़ती है. इसके लिए पूरा प्रॉपर आंसर बनाने में मुझे 5-6 घंटे लगे हैं. तो जब बीइंग अ टीचर मुझे 5-6 घंटे लगे तो आप तो स्टूडेंट हैं. इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चों को जो मार्क्स मिले होंगे ना 6, 7, 8 मिले होंगे 14 में से. तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाता है. लेट्स ट्राई टू राइट एन आंसर एंड देखते हैं क्या होता है. टू व्हाट एक्सटेंट वर द आउटकम्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेनिफिशियल फॉर इंडिया. एक्सप्लेन योर आंसर. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुई थी? 1857 में स्टार्ट हुई थी. और खत्म कब हुई थी? 1858 में. ये स्टार्ट हुई थी मीरठ में और खत्म कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी. ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? मीरठ में स्टार्ट हुई थी. और खत्म कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में खत्म हुई थी. स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ एंड कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में. और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, वो मीरठ से स्टार्ट हुई थी और खत्म हुई थी इलाहाबाद पे. और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में हुई थी. आज ये जरा शुरू हो जाते हैं. लेकिन अपने पास द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, WI, मैं शॉर्टकट यूज करो, आप लोग नहीं करेंगे. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज वेरी हैज वेरी disastrous consequences. The war of independence has very disastrous consequences. Full stop. It started from Meerut. It started from Meerut and ended at Allahabad. Full stop. It started from Meerut and ended at Allahabad. Unfortunately, Indians war हार गए थे. Unfortunately, Indians lost the. Unfortunately, Indians lost the war of independence. Full stop. Unfortunately, the Indians lost the war of independence. Full stop. लेके अपने पास after war of independence, after war of independence, raids were conducted. Raids were conducted at the houses of several people. Raids were conducted at the house of several people. Full stop. Harsh treatments, harsh treatments were done with the Indians. Full stop. Many people were being
full stop. Many people who were being killed, full stop. The purpose was the purpose was to create a horror in the minds of the Muslims. The purpose was to create a horror in the minds of the Muslims. Full stop. Gradually, Muslims were the only target of the British. Full stop. Give me a second. I'll be back. Apologies, आज कोई है नहीं घर पे तो कुछ लोग आए थे. Anyways, gradually the Muslims were the only target of the British. Full stop. British took control. British took control of India from the Mughals. British took control of India from the Mughals. Full stop. Many Muslims leaders were executed. Many Muslim leaders were executed. Full stop. Muslims were removed from higher government post. Muslims were removed from the higher government post. Full stop. The last Mughal ruler, the last Mughal ruler, कौन था? बहादुर शाह जफर टू उसको एग्जाइल कर दिया था इटली. Was बहादुर शाह जफर टू was exiled to Italy. Full stop. British took control of the East India Company as well as India. Full stop. They became they became very cautious and selective in military matters. Full stop. Like they also introduce a new policy of divide and rule. Full stop. However, the Indians got
benefits in many ways as well. Indian got benefits in many ways as well. Full stop. लिखिए अपने पास the Indians saw India getting developed, new roads and railways were constructed, modern buildings were also created, modern buildings were also created, full stop. British also created political awareness by introducing a political party known as Indian National Congress, known as Indian National Congress, full stop. They also decided to train Indian Army. They also decided to train Indian Army, full stop. Various laws were introduced, such as Indian Council Act, full stop. Indian Council Act, full stop. British Parliament, British Parliament was also introduced, who would control India, who would control India, full stop. A viceroy was also sent to India to look after the India. A viceroy was sent to India to look after India. तो वाइसरॉय भी भेजा था ताकि वो इंडिया को लुक आफ्टर कर सके. A viceroy was sent to India to look after India, full stop. Irrigation systems were also introduced. Again, give me a moment, please. Irrigation system were also introduced. जल्दी से कॉपी करें.
Like I said, I'm alone at the house. So problems. Anyways, irrigation systems were also introduced. Full stop. Agriculture production. Agriculture production increased. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में भी आना स्टार्ट हो चुका था. इंडस्ट्रियल revolution came to India as well. Industrial revolution came to India as well. Full stop. Textile mills were constructed. Textile mill were constructed. Full stop. Exports were increased. Exports were increased. यहाँ तक कॉपी करें फिर मैं मूव करता हूँ. Exports were increased. Full stop. Waiting for 30 seconds. शख्स मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास भी नहीं होगी. मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, आप लोग भी पेज ऐड कर लें. Exports were increased. Full stop. With the help of railway, with the help of railway, people were able to travel India faster. Raw material and finished goods, raw material and finished goods were also delivered. Raw material and finished goods were also delivered. Army was also able to travel whole India. Full stop. New universities and courts were set up. Full stop. Overall, Indians were benefited from the War of Independence. Full stop. Overall, Indians were benefited from the War of Independence. Full stop. मैं अगेन बोल रहा हूँ, दिस आंसर दिस क्वेश्चन इज नॉट रिकमेंडेड. आप ऐसे सवाल जो है ना एग्जाम में आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे. प्लीज डू नॉट गो आफ्टर द फ्लाइंग एरोज. समझ आ रही बात? कॉपी करें. आई एम श्योर देयर माइट बी क्वेश्चंस. मैं व्हाट्सएप पे आ जाऊंगा. मैंने अभी व्हाट्सएप बंद कर दिया. आई एम गेटिंग वेरी यूजलेस मैसेजेस. एवरीथिंग इज क्लोज. आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द पास्ट सिलेबस. क्लास के बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा. हम वैसे भी क्लास इतनी लंबी रखेंगे नहीं. हम डेली बेसिस पे जाने क्लास पे, ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे चलते हैं. ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम. आ जाओ, इस पे आ जाओ प्लीज. पेज नंबर 57. Page number 57. Explain why Sir Syed Ahmed Khan wanted to improve the relation between the Muslim community and British after the War of Independence. देखिए, इंडिया के जो नए रूलर थे ना वो ब्रिटिश थे. इंडिया के नए रूलर कौन थे? ब्रिटिश थे. अगर मुस्लिम को कुछ चाहिए होगा तो उनको किससे मांगना पड़ेगा? उनको मांगना पड़ेगा ब्रिटिश से. तो अगर रिलेशन अच्छा होगा तो ही मांग पाएंगे, वरना हम ब्रिटिश से कुछ मांग नहीं सकेंगे. हम ब्रिटिश से कुछ मांग नहीं सकेंगे. इसी वजह से सर सैयद अहमद खान जो थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहते, रिमूव करना चाहते थे. दूसरी बात, सर सैयद ने कहा था कि ना अगर मुगल एम्पायर को वापस रिस्टोर करना है, आपको मुगल एम्पायर वापस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुगल एम्पायर वापस चाहिए तो आपको ब्रिटिश के एजुकेशन, ब्रिटिश के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे. तौर तरीके कैसे सीखोगे? जब आपका रिलेशन क्या होगा? अच्छा होगा. हिंदूज क्या कर रहे थे? हिंदूज जो थे ना वो ब्रिटिश के दोस्त बन गए थे.
हिंदूज जो थे ना ब्रिटिश की चीजों को लर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मुस्लिम को भी डोमिनेट कर रहे थे। तो अब मुस्लिम के ऊपर हिंदूज की डोमिनेशन भी और ब्रिटिश की डोमिनेशन भी, दो लोग डोमिनेट कर रहे थे। इसीलिए सर सईद अहमद खान ने अपना रिलेशन को क्या करा था, इम्प्रूव करा था। इसीलिए सर सईद अहमद ने रिलेशन को क्या करा, इम्प्रूव करा। आज लिखिए अपने पास, सर सैयद अहमद खान सर सैयद Ahmed Khan was a great influencer and had always wished for better position of the Muslims. Full stop. Sir Syed wanted to develop a good relation with British as he knew that British were the rulers today and tomorrow. Full stop. Secondly, British thought. Secondly, British thought Muslims as the sole reason for the War of Independence. Full stop. Lastly, Sir Syed wanted Muslims to have Western education. वेस्टर्न एजुकेशन। अब मैं इन पॉइंट्स को ना इलेबरेट करूंगा, आई एम गोइंग टू इलेबरेट दीज पॉइंट्स। मैंने एक छोटा सा लिख दिया कि पहले पे ये चाहता है सर सैयद में, दूसरे में वो चाहता है, थर्डली वो चाहता है। तो हमने तीन रीजंस शॉर्टकट में लिख लिए हैं। इसको आप आइडेंटिफाइंग कहते हैं, आपने रीजंस को आइडेंटिफाई किया है। तो क्योंकि आपने रीजंस को आइडेंटिफाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे आपकी जबान में, लंबी करेंगे। क्या करेंगे, इलेबरेट करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। लिखिए अपने पास, सर सैयद वॉज अवेयर, मैं डबल एस लिख रहा हूं, सर सैयद was aware that British rule will not end soon, and he wanted Muslims to remain close to the British. Full stop. Muslims could get more power and say in the government full stop. Sir Syed Sir Syed also wanted to prove that Muslims were not alone in the war, as there were other people as well, So he wrote a book, the loyal pamphlet actually, the loyal Mohammedans of India. Full stop. Sir Syed also wanted to save Muslims
from the punishment. Sir Syed also wanted to save Muslims from the punishment, and due to that, he wanted to improve relations. Full stop. Sir Syed said that Hindus were very clever as they were adopting British patterns. हिंदूज जो थे ना वो ब्रिटिश के पैटर्न्स को भी अडॉप्ट कर गए थे. हिंदूज जो थे ब्रिटिश पैटर्न्स को भी क्या कर गए थे, अडॉप्ट कर गए थे. तो सर सैयद सेड दैट हिंदूज वर वेरी क्लियर as they were adopting British patterns. They were they were dominating Muslims. So to save Muslims from Hindu domination, Sir Syed wanted to remove misunderstanding. Sir Syed wanted to remove the misunderstanding. Full stop. कॉपी शॉपी करें प्लीज. अच्छा पैराग्राफ पे मत जाइएगा, मैंने 100 दफा बोला हुआ है पैराग्राफ हैज नो वैल्यू. आपकी मर्जी है, यू कैन मेक 5 10 15 20 30 40 जितने पैराग्राफ बनाने आप बना लें. टेंशन हो गया. चले जी आगे चलते हैं. आ जाओ ये भी सवाल कर लेते हैं. पेज नंबर 58 पे आ जाए. पेज नंबर 58 अक्टूबर नवंबर 2020. सर सैयद रिलेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आई वुड से 50-50 चांसेस हैं सर सैयद के आने के. तो सर सैयद को आप हल्का नहीं ले सकते. वैसे भी ये इंसान हल्के लेने वाला नहीं है. आप सर सैयद को कर सकते हैं, ठीक है ना. सवाल लिखते हैं. The two nation theory was Sir Syed Ahmed Khan's the main contribution to the development of the Pakistan movement during the 19th century. How far do you agree with this statement? अब देखें सर सैयद अहमद खान की 3 सर्विसेज थी. अच्छा मैं सर सैयद अहमद खान का लेक्चर भी खोल देता हूँ ना आज, है ना. अब जब पढ़ना ही है पढ़ाना ही है तो वाई नॉट तमीज से. तो सर सैयद अहमद खान के 3 सर्विसेज आती हैं. सर सैयद अहमद खान ने मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करा था. मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए इन्होंने एक वर्ड का मतलब बताया था जिसका नाम क्या था, नदारत. और नदारत का मतलब क्या था, बेनिफैक्टर और हेल्पर. इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था, तबीनुल कलाम. उस किताब में इन्होंने सिमिलैरिटीज बताई थी, इन्होंने किसमें, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बताई थी. फिर इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया. इस पैम्फलेट में इन्होंने मुस्लिम की लॉयल्टी शो करी थी टुवर्ड्स ब्रिटिश.
इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था, कॉजेस ऑन द इंडियन रिवॉल्ट। इस पे इन्होंने कहा था मुस्लिम अकेले नहीं है वॉर में, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो पनिश करना है तो सबको करना है, वरना मुस्लिम को भी नहीं करना है। आगे चलते हैं, एजुकेशन सर्विस पे आते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था मुस्लिम्स को कि अगर आपको वेस्टर्न एजुकेशन लेनी है, अगर आपको अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है तो आपको लेनी पड़ेगी कौन सी एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और इसी मूवमेंट के साथ इन्होंने इसी एम के साथ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। उस मूवमेंट का नाम क्या था? अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में इन्होंने बहुत सारे क्या शुरू किए थे? अलीगढ़ मूवमेंट में इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन किए थे। 1859 में इन्होंने स्कूल ओपन किया था मुरादाबाद में। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाजीपुर में। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था अलीगढ़ में, जिसको इन्होंने 2 साल के बाद कन्वर्ट किया था कॉलेज के अंदर, और 1920 में इसको इन्होंने कन्वर्ट किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल सर्विस पे सर सैयद अहमद खान ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या है? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था? हिंदूज और मुस्लिम्स का क्या है? कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन क्या है? अलग है। कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन क्या है? अलग है। आगे चल रहे थे, फिर हमने एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इस कंट्रोवर्सी का नाम क्या था? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी? कुछ हिंदूज थे बनारस के, वो कह रहे थे, कुछ हिंदूज थे बनारस के, वो क्या कह रहे थे? हिंदूज को क्या, हिंदी को क्या बना दो ऑफिशियल लैंग्वेज, किसको रिप्लेस करके? उर्दू को रिप्लेस करके। तो उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस मूवमेंट का नाम क्या था? खिलाफत, सॉरी, उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम था टू नेशन थ्योरी, फुल स्टॉप। फिर कुछ हिंदूज कह रहे थे कि एग्जाम्स करने के लिए, एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर सैयद ने कहा था मुस्लिम जाहिल हैं, वो अनएजुकेटेड, वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं, हिंदूज बोल रहे थे इंडिया के अंदर क्या लेकर आओ? डेमोक्रेसी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? डेमोक्रेसी। सर सैयद ने क्या कहा था? मुस्लिम क्वांटिटी में क्या है? कम है, वो इलेक्शंस को विन नहीं कर पाएंगे। और उसी वजह से इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? टू नेशन थ्योरी। तो अब यहाँ पे सवाल जो है, टू नेशन थ्योरी पे सवाल आ गया है। देखिए, एग्जाम में जब सवाल आता है तो जो सवाल आएगा उसी सवाल से आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर स्टार्ट करना पड़ेगा। द आंसर इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? द आंसर इज स्टार्टिंग फ्रॉम टू नेशन थ्योरी। लेके अपने पास सर सैयद, सर सैयद, एक तो व्हाट्सएप ने मेरी जान ले ली है यार। सर सैयद was a great Muslim scholar and a reformer, full stop. He always worked for the Muslims, full stop. Sir Sayyid gave three services such as two nation theory, comma, educational services, and he removed the misunderstanding between the British and the Muslims. And he removed the misunderstanding between the British and the Muslims. Full stop. And he removed the misunderstanding between the British and the Muslims. Full stop. Hindus and Muslims had different culture, comma,
language, and religion. Hindus had different culture, comma, language, and religion. Hindus and Muslims had different culture, comma, language, and religion. Full stop. They used to fight with each other. They used to fight with each other. As a result of this, Sir Syed gave a theory known as two nation. Some Hindus of Banaras said that Hindi should be the official language of India, replacing Urdu. So to protect Urdu, so to protect Urdu, Sir Syed gave two nation theory. Sir Syed gave two nation theory. Sir Syed gave a theory known as two nation theory. Full stop. In 1885, INC was formed by Alan Alan Octavian Hume. Sir Syed advised Muslims not to join this political party, not to join this political party because it was working for the benefits of the Hindus. That is why he gave two nation theory. That is why he gave two nation theory. Full stop. Sir Syed also started a movement known as Aligarh movement. In in this movement, he opened many schools and colleges. In this movement, he opened many schools and colleges. Full stop. He opened a school in Moradabad in 1859. Full stop. He opened a school in Moradabad in 1859. Full stop. He founded a scientific society in Gazipur. He founded a scientific society in Gazipur. In 1875, he opened
a school in Aligarh, in Aligarh, known as Mohammedan Anglo Oriental School, which was which was later converted into college and university, which was later converted in college and university. Full stop. Which was later converted into college and university. Full stop. Which was later converted into college and university. Full stop. आगे चलते हैं. Sir Syed also removed the misunderstanding between the British and the Muslims. He explained the meaning of the word Nadarat, which means benefactor or helper, which means benefactor or helper. He wrote a book, Tabinul Kalam, in which he explained the similarities between Islam and Christianity, in which he explained the similarities between Islam and Christianity, in which he explained the similarities between Islam and Christianity. Full stop. Copy करें यार. He wrote a pamphlet, The Loyal Mohammedan of India, in which he explained the the Muslim loyalty towards British. He also wrote a pamphlet, Causes on the Indian Revolt, in which he said Muslims were not alone in the war. There were other people as well. There were other people as well. According to above answer, the most important contribution was educational
सर्विसेज। अरे अल्लाह, तुम लोग के लिए बहुत लिखना पड़ रहा है। मेरी तो आदत ही नहीं है इतने लिखने की। नाइदर आई एम अ बोर्ड लवर, नाइदर आई एम एन आईपैड लवर। जो मुझसे पढ़ते हो जानते होंगे। बस भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। कॉपी करें, दैट्स इट। विल कीप दिस क्लास टिल। कल मुलाकात करेंगे। जय बागे फी अमान अल्लाह, दोज हु आर डन।